Hello, good morning, my dear students. Hope you all are fine and safe at your place. My dear students, welcome you all in our maths class. Dear students, today in our maths class, we are going to discuss our topic. The name of the topic is position or comparison of top and bottom. Top means ऊपर, bottom means नीचे. Top means ऊपर, bottom means नीचे. Top का क्या मतलब होता है? जो ऊपर हो. और bottom का क्या मतलब होता है? जो नीचे वाली स्थान पर, नीचे वाली जगह पर हो. My dear students, we have some images. So, with the help of these images, we differentiate our topic, top and bottom. In this image, a sparrow is in top of the flag. A sparrow is in the top of the flag and cat is in the bottom position. Okay, move to our next image. In this image, a boy is at the top of the seesaw and girl is at the bottom of the seesaw. Look at the picture carefully. Here, a seesaw and the boy is at the top of the position and the girl is on the bottom position. Okay, it's so easy to compare the top and bottom position. In our next image, a girl is on the top of the slide and boy stand at the bottom position near the slide. Okay, now in this image, one girl is on the top of the slide. एक गर्ल क्या है? स्लाइड के ऊपर वाले हिस्से पर बैठी है, टॉप ऑफ द स्लाइड. एंड द अदर वन इज द एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड. और दूसरी स्लाइड के ऊपर गर्ल है, वो कौन सी पोजीशन पर बैठी हुई है? बॉटम पोजीशन पर. लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली. इन दिस पिक्चर व्हाट यू विल सी? टेल मी व्हाट यू विल सी? यस, द बर्ड इज ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. जो बर्ड है वो कहाँ पर बैठा हुआ है? ट्री के ऊपर. एंड द कैट इज इन द बॉटम पोजीशन. और जो कैट है वो ट्री के पास नीचे बैठी हुई है, बॉटम पोजीशन पर बैठी हुई है. यस. ओके, व्हाट यू विल सी इन दिस पिक्चर? यस, हियर वी हैव 3 pots in this picture. So, the first one pot is on the top position. Dear students, look at the picture carefully. Here we have 3 pots, 1, 2 and 3. So, first one pot is on the top of the position and third one pot is on the bottom position and second pot is on the, कौन बताएगा? सेकंड पोर्ट कौन सी पोजीशन पर है? मिडिल पोजीशन पर. वेरी गुड. टॉप, मिडिल एंड बॉटम 3 पोजीशंस है यहाँ पर. जो फर्स्ट पोर्ट है वो टॉप ऑफ द फर्स्ट पोजीशन, टॉप ऑफ द बॉटम, टॉप ऑफ द पोजीशन पर है. एंड जो थर्ड पोर्ट है वो कौन सी? बॉटम पोजीशन पर है. सो डियर स्टूडेंट्स, hope you all understood the comparison of top and bottom. Let's revise this topic in our book. Okay, my dear students. Now we will revise the same topic on the book, page number 1919. Here you can see the picture. The girl said, I am at the top. You know na? What is the top position and what is the bottom position? So the girl said, I am at the top. In this picture, you can see
The girl is on the top position of the slide, and this boy is at the bottom position. Okay, now in this picture you can see the stairs. I'll read the instruction for you. Paste the sticker of the gift box at the bottom of the stair. So what we will do, we will paste a sticker of gift at the bottom of the stair. So I have a sticker of gift. Now I will paste it on the bottom of the stair like this. Okay, now here draw a cherry on the top of the cake. It's a beautiful and delicious cake, but it looks more beautiful when we draw a cherry on the top of the cake. So you can also draw a cherry to make a circle like this, and here a little curve, then their leaf. Now it looks beautiful, no? So dear students, it's your today homework. You can also paste a sticker and draw a cherry on the top of the cake. Okay students, take care. Bye bye.